Jeffrey, Good morning, everyone. Good morning, sir. morning, sir. Good morning. Good morning. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सुमेश, तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है? हाँ, आ गया, सुमेश भी आ गया। ओके, सो अभी अटेंडेंस शुरू होगी मेरे ख्याल से, कि हो चुकी? अभी नहीं हुई है। ऑलराइट, लेट द अटेंडेंस बिगिन। उसके बाद क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? 2 मिनट में, 1 मिनट में। Morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. दीप्ति अपना माइक बंद कर लो।
रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई, मुझको प्रेजेंटर भी नहीं बनाया है. लेट मी गिव ए कॉल. सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग संजीव. प्रेजेंटर बना दीजिए. रिकॉर्डिंग कौन करेगा? सर कर दिया, बना दिया सर. ओके 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 ओके. So, all right, gentlemen. Good morning once again. Where we have been in the last class? क्या कर रहे थे हम लोग? डॉपलर लॉग शुरू किया था, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. डॉपलर लॉग में कहां तक पहुंचे थे हम लोग? We saw the basic principle. इसके लिमिटेशन बता रहे थे सेकंड. बेसिक प्रिंसिपल देखा था हमने. Yes, sir. So, Mandeep, if you can tell me what is the basic principle behind operation of Doppler log? Sir, like there is an apparent change in frequency when the distance between the source and observer change due to motion. Very good. Very good. So, in the Doppler log, we have the facility or feature to know what we are transmitting. And when we receive it, it is also getting converted into electrical signal. That also we can read. So, जो transmit किया वो भी पता, जो receive किया वो भी पता. अगर दोनों same है, तो relative motion क्या होगी? 0. No relative motion, no change. If there is little bit of difference between the two, there is slight bit of change. I mean relative motion. If more change, more relative motion. So उसी से हम निकालते हैं. Basic formula, Asad. Basic formula for frequency shift. Do we remember? Asad. असद कहाँ गया? अभी तो था. ओके आदित्य, बेसिक फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट. आदित्य, क्या हो गया? जवाब नहीं दे रहे. Anyone? Yes, sir. Sir, FR equals to FT C plus V and divided by C minus V. C minus V, sir. C minus V. Very good. So this is the basic formula for calculating the FT, FR. That means the frequency received, the FR, depends on FT, the speed of the sound wave, and also the relative motion. तो इसमें FT जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कांस्टेंट होगी. जो स्पीड ऑफ द वेव है दैट विल रिमेन कांस्टेंट. तो एक ही फंक्शन है, एक ही फैक्टर है जो कि चेंज होता है, दैट इज रिलेटिव मोशन. So comparing this, we are calculating the speed of the vessel. Did we also see that when the shape is okay, when in the Doppler log, the source of transmission and reception, the observer,
both is going to be the ship only. Ship ही transmit करता है, ship ही receive करता है. But relative motion तब कैसे होगी? मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ, तो मेरा ये तो दोनों बराबर है. That is fixed, but it is not actually happening that way. Relative motion is implied by means of the seabed. I think I gave you an example. मेरे पास एक rubber ball है. I am walking towards the wall and I am throwing the ball. तो जब मैं बॉल को थ्रो करता हूं तो फेंकते समय मैं दूर था इतना दीवार से. जब वहां से टकरा के वो वापस आ रही तब तक मैं उसकी तरफ जा रहा हूं. तो जब मैं कैच करूंगा बॉल को तब तो डिस्टेंस चेंज हो गया. दीवार से मेरी डिस्टेंस चेंज हो रही कॉन्स्टेंटली क्योंकि मैं दीवार की तरफ जा रहा हूं या दीवार से दूर जा रहा हूं. So when I throw it and when it is getting reflected back, during that time, is there relative motion between me and the wall because I'm walking? Yes, sir. So Yes, this sir. is what is done. In the ship's Doppler log, transmission takes place from the ship. This transmission is acoustic wave, something like 150 kilohertz के range में होती है. थोड़ा plus minus हो सकता है. So acoustic waves are transmitted. Acoustic waves क्या है? Sound waves के जैसा. It may not be sound wave क्योंकि sound wave is those that we can hear. 150 kilohertz हम लोग नहीं सुन सकते. हमारी range है 20 hertz to 20 kilohertz audible range. Human audible range. Animals and all that they can hear more also. So we transmit the frequency, the acoustic wave. It is transmitted and it is going towards the seabed. Seabed से टकरा के वापस आता है. Sound waves get reflected back. Any waves get reflected back when it hits the surface. When it is coming back, there is a device called transducer, which is receiving the signal and converting it into electrical signal again. This electrical signal will be analyzed and will find what is the frequency of the signal. We will then compare the two. Transmit itna kiya tha, known frequency 150 kilohertz, let us say. When it is coming back, it has changed. It is 150.2, 150.3 kilohertz. So that 0.3 kilohertz difference has come because of relative motion. Why? Because the frequency of transmission was fixed. The speed of the sound wave through the salt water was fixed. So only the relative motion which is causing this frequency. So we will go to the board to understand this and explain few things regarding the Doppler log. So allow me to set up the camera. Just 1 second. All right, board visible? Yes, sir. Okay, so what happens in case of ship's Yes, sir. Doppler log is that there is a device called transducer fitted at the bottom. This is transducer. What is transducer? This converts electrical signal into sound waves and sound waves into electrical signal. So electrical signal to sound wave is transmission, and when sound wave to electrical signal,
is reception. I think I gave you the example that your microphone and speakers are transducers. But this one has to remain underwater. So iska construction special hoega, khas tarike ka. Otherwise, the function is the same. So there is this transducer which is transmitting the signal at an angle alpha, usually 60 degrees. 60 degrees पे best all-round effect मिलता है. The signal will go, it will hit the seabed and get reflected back. So what we are transmitting is FT, frequency of transmission. And what we are receiving is FR, frequency received. Now the ship is moving horizontally in that direction. That means this V, speed of the ship, is also causing an apparent motion of the ship towards the seabed. Think and tell me, when the ship is going in this direction horizontally, is the ship also going close to the seabed? Yes, Hi, Anna. Yes, sir. Yes, sir. In what way? Yes. In what way? ये तो इधर को जा रहा है. अगर सीबेड की तरफ जा रहा है तो V cos alpha. V cos alpha. So हमने बात किया था V cos alpha. That we understood. So there is an apparent motion which is V cos alpha. So this is the component. This V can be broken into two components. One is towards the seabed, the other one is perpendicular to it. This component, अगर इसी को हम देखें यहाँ पे, if this was V, if this was the direction in which it was transmitted, this can be broken down into two components, like this and like this. So this is V, this one is alpha. So in this diagram A, B, C, D, this AB is basically, अगर हम देखें, hypotenuse and base, इन दोनों के बीच का रिलेशन अगर देखें, तो what we have, cos alpha is equal to B by H. That means B is AB by H is V. That means AB is equal to B cos alpha. Similarly, this angle, since it is 90 degree and this one is alpha, so this is 90 minus alpha. So this angle 90 minus alpha, this is basically again hypotenuse and base. So same way AD is equal to cos 90 minus alpha is equal to AD by B. So AD is equal to V cos 90 minus alpha or V sin alpha. So this one becomes V sin alpha. इसका काम हमारे को नहीं है क्योंकि ये तो ऊपर का कंपोनेंट है, हवा में जा रहा है. मुझको देखना है कि सीबेड से कहां टकरा करके वापस आ रहा है. So relative motion, this one is required for. So this is the situation construction. Now what we are talking about is basic Doppler log. So first the introduction we have to give. What is Doppler log? It gives
it is a speed measuring device, works on the principle of Doppler shift effect, which says so and so. In the case of ship, the transmitter and receiver, the source and observer is both the ship only. A transducer is fitted which transmits a frequency, acoustic frequency, given frequency acoustic waves towards the seabed at an angle alpha, usually 60 degrees. The signals hit the seabed and get reflected back, which is received by the receiving transducer. After comparison between the two, the difference between the two is resolved into finding out the speed of the ship, which is v. So construction, general principle, ये क्या हम कर रहे हैं, and then finally how we do it. So basic Doppler log में speed कैसे निकालते हैं? How do we find out the speed? Remember that we had Fr is equal to Ft into C plus D by C minus V. Is that okay? Basic formula? Yes, sir. But the relative motion that we are talking about is V cos alpha here, not V cos alpha, क्योंकि यहाँ से reflection हो रही है, relative motion हम seabed के respect में ले रहे हैं. So this gives us Ft into C plus V cos alpha by C minus V cos alpha. Then we divide this numerator and denominator by the same value of C. Dividing by C, what are we going to get? We get Fr is equal to Ft into C by C का होगा 1. ये हमने किया था क्या बेसिक लॉग? यस सर, कल डिराइव कर Yes, चुके sir. हैं. Yes, sir, कल derive कर चुके हैं. तो कोई कुछ बोलेगा मुझको, मैं भूल गया तो? सर हमें लगा कि आपने पूछा फॉर्मूला, उसके बाद फिर बताने का है, आप दोबारा बताएं. हमें लगा रिवीजन करा रहे. Okay, you want me to continue with this or you're happy with the basic log derivation that we did yesterday? वो समझ में नहीं सर, नहीं सर, क्या? कंटिन्यू नहीं सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू. कंटिन्यू रिपीट करेंगे? यस सर. अच्छा चलो ठीक है, ओके रिपीट करें. सो थोड़ा क्विकली डिवाइडिंग बाय दिस वी गेट 1 plus v cos alpha by c and divided by 1 minus v cos alpha by c. मुझको भी लगा कि मैंने तो ये तो कर दिया है. This one is 1 by 1 minus x. जैसा हमने शायद कल भी बोला था, this can be written as 1 by 1 minus v cos alpha by c. So ये 1 by 1 minus x अगर पूरे को x मान ले तो it is like that. But this is a binomial expression and this expression can be resolved algebraically as 1 by 1 minus x is equal to 1 plus x square and so on. तो हम हायर पावर्स को छोड़ देते हैं, कल भी आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे जब c को स्क्वायर करेंगे तो 1500 into 1500 हो जाएगा. So this value will become too big, all this will become too small. नीचे में c स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा नीचे का वैल्यू, तो ऊपर टोटल वैल्यू. So we remove this. So using this expression binomial, we have got Fr is equal to Ft into 1 plus v cos alpha by c, जो ये वाली थी, और 1 by 1 minus x की जगह हमें क्या मिला? 1 plus x. तो x की जगह हम क्या लिखें? v cos alpha by c.
That gives us ft 1 plus v cos alpha, 1 plus v cos alpha, a plus b into a plus b whole square. हाँ, कल आपने कहा था कि फिर स्क्वायर वाली को हम फिर से हटा दे सकते हैं. Yes. So this gives us 1 plus 2v cos alpha by c. सब लोग ठीक है, एक पेज पे हैं, समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बताना. One plus two. प्लस होगा ना. Okay, so here we have ft into a plus b whole square is a square plus 2ab 2ab, b is v cos alpha by c, plus b square, which is v square cos square alpha by c square. Is that okay or not? तो इस वाले को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, फिर से छोड़ रहे हैं, क्योंकि c square हो गया हायर वैल्यू. So we are left only with this much. So 2 into 1 is 2 only. So 2v cos alpha by c. Is that okay? Yes. Yes, sir. तो यहां से फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे और इसको इससे. सो दिस ऊपर में मैं मिटा रहा हूं जरा सा. So this gives us fr is equal to ft. इसको मल्टीप्लाई किया प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई किया 2v ft cos alpha by c. तो यहां से हम डिराइव करके निकाल सकते हैं. v को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ. तो दिस विल गिव अस fr minus ft is equal to 2v ft cos alpha by c. Now remember this expression. This we are going to use later on also. इसको हम बाद में भी यूज करेंगे जब आगे और चलेंगे जरा सा. So fr minus ft is equal to 2v ft cos alpha by c. So can you now give me the value of v? Sir, v equals to c bracket में fr minus ft divided by 2ft cos alpha. Exactly, एकदम सही बताया आपने. So from here we get v is equal to fr minus ft into c divided by 2ft cos alpha. So this is the formula for basic log. Now we can calculate the value of v using fr, ft, c. देखो हमारे पास ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी थी, हमने रिसीव किया, c 1500 है, 2 is 2, ft we know, cos alpha we know because हमने ही फिट किया है. So we can be calculated. But there is a big problem with this. What is the problem with this derivation or this formula? What is the problem with this formula? It is only applicable if frequency is increasing. नहीं, अगर डिक्रीजिंग भी होता है तो भी हो सकता है. वेरी गुड पॉइंट, थॉटफुल पॉइंट.
वैसल only के सर for एक ही तरफ का linear movement motion, but we also हमने- go up and down while moving. Yes, exactly. We have not considered the vertical motion of the ship. What happens जब जहाज आगे चल रही है तो ट्रांसड्यूसर यहाँ पहुंच गया तो relative motion हो गया. Distance between this and this is changing. But when the ship is moving through the water, she not only goes like this, steady, but she also keeps on going up and down, up and down, up and down, called heaving. The vertical motion of the ship is called heaving. That we have not considered. Supposing that ship had gone from here to here, ये यहाँ तक चली गई थी, ट्रांसड्यूसर आगे चला गया. Meanwhile, अगर शिप नीचे भी डिप कर जाती थोड़ी सी, तो ये ट्रांसड्यूसर और नजदीक आ जाता है या नहीं? Yes, sir. If the seabed is here, the ship is here. Now let us think my wrist here is the reference point where it is transmitting. So is it the ship, is it coming too close to the wrist? नजदीक आ रहा है यहाँ से Yes. पॉइंट के नजदीक. Yes, sir. धीरे धीरे करता बट अगर जहाज थोड़ा नीचे गया तो और नजदीक जा रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सो वर्टिकल मोशन से नजदीक जाता है, अगर जाते जाते ऊपर हो गया तो इस पॉइंट से दूर जा रहा है या नहीं? So when the ship is going up and down, she is also going away or close to the seabed. That means that relative motion also is going to affect the frequency shift. As we said, that in this case, if the ship was here, the transmission happening at this place, when the ship is dipping down, she comes down like this at the speed of VV. तो ट्रांसड्यूसर जो यहाँ पे था, अब ट्रांसड्यूसर यहाँ पे आ गया, तो इज दैट क्लोज और नॉट? अगर FT ट्रांसमिट किया था हमने, तो रिसीविंग के समय FR बदली होगा या नहीं? Yes, sir. So we considered only this, which was V cos alpha. V के चलते हमने तो ये ले लिया, लेकिन इसके चलते तो नहीं लिया. So इस केस में, if the ship was transmitting in this direction, which was the transmission, and there is vertical velocity VV, तो इसका हम ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? A, B, C में AB की वैल्यू क्या आएगी इस डायरेक्शन में? What is the relative motion? VV sin alpha. Very good. So this we did VV sin alpha. So there are two relative motions. एक V के चलते V cos alpha and VV के चलते VV sin alpha. There are two relative motions. Both are going to cause frequency shift. Both are going to participate in the change of the frequency, जो हमने basic log में consider नहीं किया है. So to cater to this problem, okay, so we have to be very, very clear with the problem with the basic log. जब भी हम अगले स्टेप की बात करेंगे या पूछा जाएगा कि what is the problem with the basic log, we can talk about this. और इसका इम्प्रूवमेंट जो हम यूज करते हैं उसमें भी बताना पड़ेगा कि बेसिक लॉग में ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम ये करते हैं. So the next step, how we take care of this problem. So now what we have is an improved version of the Doppler log called Janus configuration. Janus configuration Doppler log. What is this Janus? Janus is a Roman god
he is supposed to be having two faces. He is supposed to be having two faces. One looking in the future, also looking in the past. At the same time, the God is able to see the future and the past together, having two faces. And इन्हीं God के नाम पे हमारा genus configuration Doppler log है. So what is this genus configuration? Now that you know about the God genus, what should happen in the ship's Doppler log? Common sense. दो डॉपलर लॉग फिट होंगे सर, एक उसको रीड करेगा, एक उसको रीड करेगा। किसको रीड करेगा? तो दो डॉपलर लॉग को हमें मिलाना तो एक ही होगा, गॉड तो एक ही था ना, फेस दो थे, दो गॉड अलग तो अलग दो वेव निकलेंगी सर, जो एक दो लीनियर waves निकलेंगी. Yes, that transmission is happening in forward and aft both the directions, both at the same angle alpha, but one is transmitted in the forward direction, the other one in the aft direction. The ship is moving like this at the speed of v, horizontal speed. There can be speed which is vertical motion. अगर जहाज है heaving हो रहा है तो एक बार नीचे जाएगा तो ऊपर भी जाएगा. So it can be both the ways. Let us take the case when the ship is dipping down. So on the seabed, if we see, this V was causing V cos alpha. But this vertical motion was causing what kind of relative motion towards the seabed? VV was causing what kind of motion? Relative motion? The VV sin alpha. Very good, VV sin alpha. Suppose the ship is going down. तो ये transducer यहाँ पे आ जाएगा. So is this transducer coming close to this point or away from the point? हाँ जी, away from the point. अवे. अगर यहाँ से जहाज नीचे जा रही है तो इसके नजदीक जा रही है कि दूर जा रही है? पास जा रही है सर, पास जा रही है. पास जाएगी। तो इस ये ट्रांसड्यूसर इसके चलते भी पास जा रहा था, इसके चलते भी पास जा रहा है, मतलब साइन इसका VV साइन अल्फा होगा, दोनों जुड़ रहे हैं. Now the next one we take about this. When the ship is going in this direction, because of V, is it going close to this point or away from the अवे point? सर, अवे. अवे. So जो ये स्पीड थी ये माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि ये इसके नजदीक जा रहा था, इससे दूर जा रहा है. So this should be so and so. Again at this point when the ship was dipping down, going close or getting away? क्लोज सर. Close. That means इसका भी साइन will be VV sin alpha. ये भी sin alpha plus, ये भी sin alpha plus, but यहाँ पे V cos alpha getting close minus V cos alpha getting away. So these are the two relative motions which is taking place together. Please make this diagram. I will be rubbing it off to explain the derivation part. सो ये सेकंड वाला फिर से बता दिए, माइनस वी कॉस अल्फा प्लस वी साइन अल्फा. ओके, एक नंबर लाइन है. नंबर लाइन ये दूसरी तीसरी चौथी क्लास में होता है. ये 0 0 है. अगर मैं यहाँ पे बढ़ता हूं तो 1 2 3 इधर को बढ़ रहा हूं तो क्या नंबर बढ़ रहे हैं? अगर यहाँ से इधर को जाऊंगा तो 3 से 2 1 0 होगा. अगर मैं और इधर को गया तो क्या होगा? यहाँ पे
कम होगा। -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा या नहीं? So Yes, one sir. side is plus, the other side is minus. अब ये जहाज जब आगे को जा रही है तो इस पॉइंट के नजदीक जा रही है या नहीं? Yes, sir. So that is plus. But the same point when it is going this side, it is getting away from this point or not? Yes, sir. यहाँ ये वाली जो ट्रांसड्यूसर इससे दूर जा रही है क्या नहीं? Yes. So नजदीक जाती प्लस तो दूर जाती हुई, Minus. so is it okay? Okay, sir. Understood? Yes, sir. Thank you. Okay. So please make this diagram. एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर जैसे ये वीवी साइन अल्फा वाला सर नीचे जा रहा है तब हम लोग प्लस कर रहे हैं, बट सर हाँ। अगर वही शेप थोड़ा ऊपर जाए तो सर वो माइनस भी तो होगा। एकदम होगा, जब वीवी हम ऊपर को लेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। जब तो सर ऊपर जाएंगे, ट्रांसड्यूसर ऊपर को जा रहा होगा, जहाज ऊपर जा रही है तो इससे भी दूर, इससे भी दूर, तो माइनस ले लेंगे। हमने एक केस लिया कि अभी मान के चल रहे हैं कि चलो हम एक केस स्टडी कर रहे हैं कि जब नीचे जा रही है तो क्या। ओके ठीक सर। है, अभी हम एक केस ले रहे हैं, ऊपर जाएगी तो दोनों माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, मतलब दोनों का साइन एक ही रहेगा, ऊपर जाए तो माइनस, नीचे आए तो प्लस। गुड। यस सर। So we are just taking right now the case when it is going down. हमने ये वाला केस लिया है, ऊपर में भी वही चीज होएगा, जो नीचे होता है वही चीज ऊपर होएगा, लेकिन हम पहले एक सिचुएशन स्टडी कर लेते हैं। डायग्राम फिनिश्ड? Yes. ओके। सो अभी जो आपने बेसिक लॉ डिराइव करी थी फॉर्मूला, तो आपका आया था एफ आर माइनस एफ टी। ये क्या था? इज इक्वल टू हाउ मच? हाउ मच? C minus 2 क्या? सर FT minus cos alpha. Was it this or not? यस सर। So in the genus Yes, sir. configuration, we have got two transmissions coming, FT being transmitted in both the sides, same frequency, same angle. तो एक फॉरवर्ड से आएगी फ्रीक्वेंसी रिसीव, इसको हम बोलेंगे FRF, और एक जो यहां से वापस आएगी उसको बोलेंगे FRA, A for aft, F for forward. Is that okay? दो फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है ना, एक सामने से आएगा, एक पीछे से आएगा, दो आ रही, दो ट्रांसमिशन, दो रिसेप्शन। इज इट ओके? Yes. So for forward transducer, we will write it FRF minus FT. ये जो शिफ्ट हुआ था, this was because of V cos अल्फा से हमने ये निकाला था, लेकिन VV sin अल्फा से भी वैसा ही निकलेगा। So this will get added up to VV FT sin alpha by C. Is that okay or not? Yes. Is it totally clear? Why is it coming like this? Remember that we have two relative motions here, V cos alpha plus VV sin alpha. इसके चलते ये वाला और इसके चलते ये वाला। Is it okay? सर एक बार ये फिर से बताना जो जस्ट आपने अभी समझाया।
the difference of the frequency, remember, when the ship is going like this, supposing the ship was here, it was transmitting in this direction. When the ship is dipping down, when the transmission was here, now it has come in this direction at VV. तो इसके चलते ये VV sin अल्फा हुआ या नहीं? यस सर. ओके. अगर हम सिर्फ जो पूरी डेरिवेशन हमने करी थी बेसिक लॉग में, तो इसके चलते एक FR जो है वो मिलेगा हमें या नहीं? FR रिसीव होगा कि नहीं VV sin अल्फा के चलते? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी या नहीं? यस सर. तो अभी हम V को छोड़ देते हैं, सामने को छोड़ देते हैं, कुछ नहीं है, अपनी जगह है. इसी को हम अगर फिर से शुरुआत करें, FR is equal to FT into C plus VV sin अल्फा by C. सॉरी, ये इसी तरीके से बढ़ेगा या नहीं? प्लस VV sin, ये माइनस अल्फा by C. जैसे हमने शुरुआत करी थी पुराने वाले पहले वाले डेरिवेशन की, उसी स्टाइल में VV sin अल्फा लेके होगा या नहीं? नहीं समझ में आया? एक स्टेप पीछे जाते हैं. Let us go one step behind. FR is equal to FT into C plus VV sin alpha by C minus VV sin alpha. होगा या नहीं? Relative motion VV sin alpha causing frequency shift, which will be given by this formula or not? यस सर, करेक्ट. तो इसको हम फिर से अगर डिवाइड करेंगे, वैसे ही डिवाइडिंग बाय C, डिवाइडिंग बाय C, डिवाइडिंग बाय C, डिवाइडिंग बाय C, तो will this be FT into 1 plus VV sin alpha by C divided by 1 minus VV sin alpha by C? होगा या नहीं? यस सर. तो फिर से ये 1 by 1 minus x की फॉर्म में आएगा, तो दिस विल बी FT into 1 plus VV sin alpha by C into 1 plus VV sin alpha by C. A plus B होल स्क्वायर वाला सिचुएशन आएगा या नहीं, जैसे V cos अल्फा में आया था? यस? नहीं समझ में आया? स्पीक. स्पीक आउट. कुछ कनेक्शन की दिक्कत हुई? हेलो, व्हाट हैपेंड? मुझे जवाब दो, कौन कौन बात कर रहा था मेरे से? Not able to listen, Mudit? You log off and log in once again. I'll wait for you. आ गया सर. आ गया. ओके. सो यहाँ तक क्लियर है या नहीं? यस सर. तो इसको आगे हम रिजॉल्व करेंगे. a plus b, तो a plus b होल स्क्वायर हो गया. तो दिस विल सर ये 1 प्लस आएगा ना, माइनस सॉरी प्लस सॉरी प्लस. तो a plus b होल स्क्वायर हो गया या नहीं? So again here we will get FR. Finally look to the previous one, पुराने वाले से मैच करते जाओ. FR minus FT is equal to 2VV FT sin alpha by C. ये होगा या नहीं? एक स्टेप बीच में मैं खा गया, वो आपको मैं कह रहा हूं कि अपने जो नोट्स में अभी लिखा था पिछला वाला, उसमें से रेफर कीजिए. प्लीज कंफर्म दैट यू आर क्लियर विद दिस.
Yes, sir. Yes, sir. So, sorry, frequency shift because of this motion, vertical motion is the same. ये अगर सिर्फ वर्टिकल मोशन होती तो यही आता है, साथ में अगर हॉरिजॉन्टल मोशन भी है तो यही चीज 2v ft cos अल्फा बाई सी हो जाएगा या नहीं? दोनों के हो जाएगा, चलते, सर। किसके चलते? ये वर्टिकल मोशन के चलते, हॉरिजॉन्टल मोशन के चलते, ये दोनों एड अप हो जाएंगे या नहीं? यस, सर। तो इसी को मैं कह रहा था जो मैंने शुरुआत में लिखी जेनस कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में, that now that we have two transducers, forward में FRF and aft में FRA. So for forward transducer, what we are having? We are having FRF minus FT. Is it? Yes. Is it okay now? जो टोटल sir. शिफ्ट हो रही है, जो टोटल शिफ्ट हो रही है वो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के चलते हो रहा है v के चलते, और दूसरा हो रहा है vv के चलते। एक इसके चलते ये और vv के चलते ये। इज इट ओके नाउ? यस। इसमें यही किया ना सर, अपन ने v की जगह पे vv की और v की वैल्यू दोनों डाल दी। v की जगह v cos अल्फा आया था पहले वाले केस में, रिलेटिव मोशन v cos अल्फा, उसके चलते ये वैल्यू आई थी या नहीं? यस सर। अगर vv सिर्फ होता तो ये वैल्यू आती है या नहीं? अभी डिराइव करके दिखाया ग्रीन में। हाँ हाँ सर, वो आगे समझ में। तो दोनों ही हो रहा है। मैं चल रहा हूं, देखो मैं इधर को जा रहा हूं तो मैं आपके नजदीक गया या नहीं? कैमरा के नजदीक आया या नहीं? मैं आपकी तरफ नहीं जा रहा, उधर नहीं जा रहा, मैं इधर को जा रहा हूं। हैव आई कम क्लोज टू यू? यस सर। हैव आई आल्सो कम क्लोज टू यू नाउ? यस सर। तो मैं हॉरिजॉन्टल चलता हूं तो ऐसे ही नजदीक जा रहा हूं आपके, साथ में वर्टिकल भी चलता हूं तो और नजदीक जा रहा हूं ना? हाँ सर। तो रिलेटिव मोशन बढ़ गए ना, एक इसके चलते रिलेटिव मोशन, एक इसके चलते रिलेटिव मोशन। हाँ सर। तो दोनों ही एडअप हो गए ना, दोनों रिलेटिव मोशन। तो दोनों रिलेटिव मोशन एडअप होएगा तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट और बढ़ जाएगी या नहीं? यस सर। So that is what is happening. So now verify again, think about it कि हाँ ठीक जा रहा है, अब समझ में आता है। Please tell me you are okay. Yes. Yes, sir. All good, Mudit? जी सर। यस सर। So इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो वैसे ही आफ्ट ट्रांसड्यूसर के लिए जो होगा this will be FRA minus FT, वही चीज रहेगी, but this time in this case here it was V cos alpha. What was this side? minus v cos. Very good, very good. So this will be minus V cos alpha, same चीज होगी, minus 2V FT cos alpha by C, और ये वाली वर्टिकल वेलोसिटी का क्या रिलेशन था? माइनस या प्लस? प्लस Same sir, plus. प्लस रहेगा। वेरी गुड। सो 2VV FT sin अल्फा बाय C, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते। नाउ व्हाट वी डू, 1 minus 2, डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच का।
सो LHS को माइनस करते हैं, RHS को माइनस करते हैं. So is it going to be FRF minus FT, ये वाला, minus this which is FRA minus FT. LHS minus हो गया. Then RHS minus करेंगे, which is 2VFT cos alpha by C plus 2VVFT sin alpha by C. This one, from this we minus the second part. The second part is what? Minus 2VFT. Minus 2VFT cos alpha by C plus 2VVFT sin alpha by C. Is that okay or not? Yes. So यहाँ पे minus plus minus 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 plus. So this minus FT and plus FT will be cancelled out or not? Yes, sir. Now this is minus, so minus minus Plus. plus minus and plus Minus. minus. So this plus 2VVFT sin alpha by C minus 2VVFT sin alpha by C will be cancelled out or not? Yes, sir. Yes, sir. So going upstairs, यहाँ पे मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा मिटाऊं? Yes. Yes, sir. मिटा दीजिए सर. हो गया. So from here, what we get is that FRF minus FRA. इधर का रह गया LHS ये, और यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए. यहाँ पे 2VFT cos alpha by C plus 2VFT cos alpha by C. So is this 4VFT cos alpha by C? Is that okay or not? 2 Yes, plus sir. 2. Yes, sir. So from here, tell me the value of V. Sir, C bracket FRF minus FRA upon 4 F cos alpha F नहीं FT. FT cos alpha. So in this, did we consider the vertical motion? Yes, sir. And in the end, what we are saying, any role of the vertical motion in the formula? No, sir. No, No. sir. sir. Vertical No, sir. motion का component getting cancelled out in the derivation itself. Yes, sir. Yes, sir. That means the speed is now independent of vertical motion. होता रहे, मुझको फर्क नहीं पड़ता अगर मैं ये फॉर्मूला लूं तो. Yes, sir. Yes, sir. पहले वाले फॉर्मूला में हमने कंपैरिजन क्या लिया था? We had FR minus FT. Now what we are taking? Frequency of forward AC minus frequency of. forward and up. तो पहले ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड का डिफरेंस देख रहे थे, अब हम रिसीव्ड एंड रिसीव्ड का डिफरेंस देख रहे हैं. और ये करने में एक और कंपोनेंट चेंज हुआ, जो 2FT cos अल्फा था वो 4FT हो गया. रिजल्ट क्या हुआ? We are now independent of vertical motion. This genus configuration is now independent of vertical motion. There is no effect of heaving motion if we use the genus configuration log, in which the speed is calculated by this formula. Are we okay?
Yes, sir. So डेरिवेशन के बाद कंक्लूजन जो अभी बात किया हमने, that as we can see that the vertical component gets cancelled out in genus configuration. The vertical components get cancelled out in genus configuration. And so the log becomes independent of heaving motion. There is no effect of heaving on the indicated speed. जो स्पीड दिखा रहा है उसमें heaving motion का कोई impact नहीं. तो हमने कंसीडर भी कर लिया, वर्टिकल मोशन को लेके चले भी थे और लास्ट में जाके हमने उसको रास्ता भी दिखा दिया कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं. So are we good with this genus configuration? Are we sure? Now do we understand that genus configuration gives us the speed where we are taking the horizontal motion, also the vertical motion, but vertical motion का impact या effect नहीं होता है. Are we good? Yes, sir. Yes, sir. Any questions? Yes, sir. Any questions from your side? No, sir. No, sir. No, sir. सर ये डेरिवेशन अगर जैसे एग्जाम में आता भी है तो इसको एकदम स्टार्टिंग से करना होगा, जेनस कॉन्फ़िगरेशन का भी आया तो. Okay, a good question. When only the genus configuration is asked, you start with the formula, giving the formula of the basic log. That the basic log calculates the speed like this: fr minus ft is equal to 2v ft cos alpha by c वाला वो करके दीजिए. v is equal to fr minus ft into c divided by 2ft cos alpha, and tell the problem there that this does not consider the heaving motion of the ship, vertical motion, which is corrected by the genus configuration, in which there are two transducer, two sets of transducer, one transmitting forward, the other transmitting aft, both at the same angle. There are two frequencies received from two different directions, from aft and from forward. And then show this derivation, come out with the answer, the formula, and conclusion. Close it with the conclusion. What did you achieve by this? That it is free of vertical motion, independent of vertical motion. Close. If the question is saying, explain the working of Doppler log, तो शुरू से लेके अंत तक देना होगा. पहले बेसिक बताना होगा, प्रॉब्लम बतानी होगी, इंप्रूवमेंट जेनस कॉन्फ़िगरेशन बताना होगा और नेक्स्ट स्टेप में फाइनल कंक्लूजन देना. ठीक है? So you look at the question, what the question is asking, and address that question. All right? Okay, sir. Okay, Yes, sir. sir. Thank you. Okay, चलो bye bye, have a great day. Then we'll meet again. आज तो क्लास मेरे ख्याल से नहीं है ना, आज नहीं है. So अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसको आगे ले जाएंगे. We will see one more bit of derivation in this itself, which is not very complicated. सब इसी पे 2 लाइन का था ना, एक पहले वाले समझ गए हम, तो दूसरा Yes, sir. वाला जो है it is very simple. ऐसे ही fr minus ft करके शुरुआत करते हैं और माइनस करते ही रिजल्ट आ जाता है. So no issues at all. चलो, we'll meet again. Bye bye. Have a great day. Signing Okay, off. thank you, sir. Thank you, sir. Hello. Thank you, sir. Thank you, Bye sir. bye. Signing off.